Hello everybody, welcome back on my YouTube channel, My Studies by Sunny Singh. I'm here with a new video in which we will study the uses of will, would, shall and should. As in my previous videos, we have already discussed some of the uses of modal auxiliary verbs. So in the same series, this is part third, in which we are going to study the all four models and their uses. Guys, as I have already proclaimed to you all that this is the channel to teach you English and English language for your general competitions or for your language improvements. So if you are new for the channel, subscribe it. If you are already the member of the channel, then keep watching the videos and keep learning. आपके जो doubts हो that you can put in the comment box or can ask me by texting it so that I can reply the answers. So here we go, studying will, would, shall, should. Let's start with will. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं will. आज इस हम वीडियो में हम पढ़ेंगे will, would, shall, should. ये हमारे मॉडल्स के पार्ट हैं. एंड जब हम will की स्टडी करते हैं तो माइंड इट इन अ सिंपल कंबाइंड सेंस वी कैन से will and shall. will and shall ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस में करते हैं. रिमेंबर गाइस, फ्यूचर टाइम रेफरेंस. will and shall दोनों वर्ड का यूज हम फ्यूचर टेंसेस, फ्यूचर टाइम को रिप्लेस करने के लिए करते हैं. जैसे अगर कुछ काम आप कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू डू दिस और लाइक यू आर गोइंग टू डू दिस इन कमिंग टाइम, फ्यूचर टाइम, देन यू शुड यूज विल और शैल. इन द ट्रेडिशनल ग्रामर, पुरानी ग्रामर में ऐसा विल एंड शैल को सेपरेट किया गया था. देयर यूजेस वर डिफरेंटली रिटन एंड डिस्क्राइब. बट अब एक्चुअली क्या है, विल एंड शैल इन दोनों को यूजेस को कंसाइज कर दिया गया है. और जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता था कहाँ विल यूज करें कहाँ शैल यूज करें, अब वो कंफ्यूजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. बिकॉज नाउ इट इज विल इज यूज विद ऑल द सब्जेक्ट्स. सो लेट मी मेक इट क्लियर दैट विल और शैल का यूज हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस में करते थे. जैसे आई विल गो माई होम टुमारो. सो आई विल गो होम, हियर गो होम, विल गो होम मतलब आने वाले टाइम में हम जाएंगे, या आई शैल गो होम. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट रखा है जो आप बड़ी ध्यान से देखिएगा. यू शुड लर्न दिस. एक्चुअली पहले क्या होता था, विद द सब्जेक्ट आई एंड वी यूज टू राइट शैल. स्टडी हम विल और शैल के आई एंड वी के साथ शैल को स्टडी करते थे एंड वी यूज टू राइट विल एंड शैल विद देम. ना और फिर क्या होता था, यू, ही, सी, इट, दे और अदर सब्जेक्ट, इनके साथ हम विल का यूज करते थे. बट फॉर नाउ इन नोट नंबर थर्ड यू रिमेंबर we use will with all. Remember guys, we use will with all. Will with all subject. It means what? आज अब will का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं. देयर इज नो कंफ्यूजन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि अब will और shall केवल आई और वी के साथ यूज होगा. रिमेंबर, इट कैन बी यूज विथ एनी सब्जेक्ट. इवन will shall को रिप्लेस कर सकता है. मीन्स अब जहां shall यूज करते थे वहां हम will यूज कर सकते हैं, और जहां will का यूज होता था वहां will यूज पहले से ही होता था. सो रिमेंबर, देयर इज नो कंफ्यूजन. इन नोट्स के बाद लेट्स कंटिन्यू टू द लेसन. फर्स्ट वी हैव डिस्कस फ्यूचर टाइम. रिमेंबर, विल और शैल का यूज फ्यूचर टाइम्स के लिए किया जाता है. नाउ नेक्स्ट, टू शो डिजायर और चॉइसेस. आपकी कुछ डिजायर्स और चॉइसेस हो, उसको एक्सप्रेस करना हो तो यू कैन यूज विल. लाइक आई विल ईट 5 pizzas.
So will eat 5 pizza. It's my desire or it's my choice to eat pizza, so I will it. And now after uses of will remember will का यूज आप डिजायर के लिए चॉइस के लिए करते हैं. दूसरा will का और shall का दोनों का कंबाइंड यूज फ्यूचर टाइम के लिए करते हैं, आने वाले टाइम को बताने के लिए करते हैं. Now the third use of will is used to indicate determination, instances and warning. Guys, as per the traditional grammar, जैसे traditional grammar हमारा कहता है कि I we के साथ shall यूज करते हैं and you he she it they के साथ will यूज करते हैं. तो एक्चुअली क्या होता था, जब हम I और we के साथ will का यूज कर लेते हैं या you he she अल्टरनेटिवली इनके साथ shall का यूज कर लेते हैं, तो वो सेंटेंसेस हमारे डिटर्मिनेशन को इंडिकेट करता है. समथिंग विच इज डिटरमाइंड, समथिंग विच इज फिक्स, जो काम हमें एकदम फिक्स है कि करना ही है, हमारा पर्पस है, हमारी कैपेबिलिटी है, ऐसे कामों को बताने के लिए भी हम विल और शैल दोनों का यूज करते हैं. माइंड इट फ्रेंड्स, बस ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है कि इनके साथ हम विल का यूज कर लेते हैं. आई और वी के साथ आई विल प्ले, तो मतलब आई एम डिटरमाइंड, मुझे खेलना है, दैट्स व्हाट. और अगर मैं ये कहता हूं यू शैल प्ले, मींस आप डिटरमाइंड हो कि आप खेलोगे. इन दैट कंडीशन इट शोज डिटरमिनेशन. इंस्टेंसेस वार्निंग, किसी को वार्निंग देना चाहते हैं तो उसके लिए भी विल और शैल का यूज किया जाता है अल्टरनेटिवली. बट नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अब इनका डिफरेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. विल इज ऑलमोस्ट गॉन फॉर दीज यूजेस. अब सब जगह हम शैल इज ऑलमोस्ट गॉन फॉर दिस यूजेस. वी यूज विल in all the conditions now. और अगर किसी को प्रॉब्लम हो, डाउट हो कि कहाँ shall कहाँ will यूज करें, for them there is a short note you can just look at here. If we use I, we can use the constructed form I will, I shall. This is the understanding for the examiner, and you can use this freely. There is no limitation of any obstructions for this. Like you can also use you will. It means you shall or you will. Both are understood like. So अब हम I के साथ will और V के साथ भी will use कर सकते हैं. That shows determination. Remember, कोई काम जो पक्का फिक्स है आप इरादे के साथ, उसको बताने के लिए. Now next, फिर से देखिए, एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. will का यूसेज हम लोग will और shall कंबाइन यूज करते हैं फ्यूचर टाइम्स को बताने के लिए, आने वाले टाइम को बताने के लिए. फिर विल का यूज हम अपने डिजायर को, हम अपने विश को, हम अपने चॉइस को बताने के लिए कर सकते हैं. जैसे आई विल ईट 5 पिज्जा, आई विल ड्राइव माई बाइक वेरी फास्ट, सो दैट्स ड्राइव, आई विल ड्राइव इट माई डिजायर, सो आई सो माई डिजायर विद विल. उसके बाद कैपेबिलिटी, डिटर्मिनेशन या इंस्टेंसेस, मतलब कोई चीज जो आपके अंदर की क्षमता है उसको बताना है, या फिर एकदम आप डिटरमिन है कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, मैं करूंगा. तो करूंगा अगर बताते हैं कि नहीं मैं तुम्हें देख लूंगा, तो दैट्स आई विल सी यू, आई विल सी यू. तो दैट इज अ काइंड ऑफ वार्निंग, दैट इज अ काइंड ऑफ इंसिस्टेंस. सो आप किसी को इंसिस्ट कर रहे हो, नहीं मैं करूंगा ऐसा, तो दैट्स, और मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं पास करके दिखाऊंगा, तो आई विल पास द एग्जाम. तो इन दैट कंडीशन आप will का यूज कर सकते हैं. and there is construction form, you can combine them together, that will be constructed form. So I apostrophe, or you can say inverted comma, single and then double L, that is written in the constructed form. Now सेल का अब जो सेपरेट यूज बचा है, वो एक सिंगल एंड सेपरेट यूज बचा है सेल का, वो हमारे लिए बन जाता है that is suggestions और simple questions. तो सेल का यूज अभी भी हम सेपरेटली suggestions और simple questions के लिए करते हैं. फ्रेंड्स याद रखिए कि जब कभी आपको किसी को सजेशंस देने हो, या अपने सजेशंस किसी को शो करने हो, बताने हो, या सिंपल क्वेश्चंस पूछने हो, तो यू कैन यूज सेल. फॉर एग्जांपल, shall we go now? So shall we start? Shall we read? Shall I continue the lesson? Shall I continue preparing videos for you? Shall I continue uploading the grammatical topics for you? Shall I get such kind of topics involved for your self improvement? So such kind of things can be there. Shall suggestions के लिए और simple questions के लिए अभी भी separately use
होता है आप यूज कर सकते हैं। आप आफ्टर द यूजेस ऑफ विल एंड शेल, लेट्स कम टू यूज वुड एंड शुड। गाइस, अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आई विल क्लियर आउट योर डाउट्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आपके पास किसी तरह का भी कोई भी ग्रामेटिकल सेट बुक हो, किसी तरह का भी ग्रामेटिकल बुक हो, ग्रामेटिकल बुक को खोलिए, उसमें मॉडल चैप्टर निकालिए एंड डू द एक्सरसाइजेस। आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं कि आप इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद इजीली कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं एक एक्सरसाइज भी लाऊंगा आप लोगों के लिए, इन विच वी विल डिस्कस हाउ टू डू द एक्सरसाइज एंड व्हाट विल बी द परफेक्ट मॉडल्स फॉर द कंप्लीट exercise. So now let's come for uses of wood. Guys, the first thing is, आप remember कीजिए the first video of model in which we have discussed कि will, would, shall, should. It means will का past form, the past form of will is would. पहला use, prefers past of will. Remember guys, it is the preference of the past form of will. वुड विल का पास्ट फॉर्म है। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्टडी करेंगे, इन दैट केस, इन दैट स्टडी वी विल चेंज विल इनटू वुड, शैल इनटू शुड। द फर्स्ट यूजेस ऑफ विल एंड the first uses of would and should. Remember guys, would is the past form of will, should is the past form of shall। एंड जब हम इसका shall का नेगेटिव बनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, when we change shall into negative, that becomes shan't। Remember guys, shan't, and will becomes won't। Will plus not, it means will plus not। Remember guys, will plus not is want and shall plus not is shan't। ये भी याद रखिएगा, constructors form। yes, now after this, after the first uses, second, let's talk। वुड हमारा एक ऐसा वर्ड है विच इज यूज फॉर एडवाइस, पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट, सजेशंस। वुड का यूज करके आप पोलाइट रिक्वेस्ट भी करते हैं, पोलाइट एडवाइस भी देते हैं। तो गाइस रिमेंबर, वुड कैन बी यूज टू शो रिक्वेस्ट और एडवाइस बोथ। रिक्वेस्ट और एडवाइस के सेंस में जब हम वुड का यूज करते हैं तो वो आपको मैं थोड़ा सा बैक ले जाऊं तो वुड और कुड दोनों पोलाइटनेस को इंडिकेट करता है, लेकिन कुड वुड से ज्यादा पोलाइट होता है। माइंड इट, जब आप पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने पोलाइट में, अपने सेंटेंस में पोलाइटनेस लाना चाहते हैं, तो यू कैन यूज वुड और कुड, बट कुड जो होगा वो वुड से ज्यादा पोलाइट है। रिमेंबर, उसके बाद सेकेंड प्लेस पे पोलाइटनेस में हमारा वुड का आता है। तो आप इस के लिए, जैसे would you like to have a cup of tea, would you like to have live class with me, would you like to attend my live classes of language, so that would, remember, would is used for request, a sense of politeness। now advice, when we talk about advice guys, it is frequently used for advice, or you can also say it is used in conditional sentences are there. There are studies of conditionals in which would is used in the second condition। second condition में हम would का यूज करते हैं। तो जहां की हमारा कंडीशन होता है उसकी कॉम्बिनेशन होती है सेंटेंसेस का if plus simple past and then subject and then would। इसमें जैसे एग्जांपल देखिए, इफ आपने सुना होगा कि अगर मैं राजा होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये करता। दैट्स अ काइंड ऑफ एडवाइस, दैट्स अ काइंड ऑफ एडवाइस और अ काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो लेट्स सी द एग्जांपल, इफ आई वर यू आई वुड स्टडी इंग्लिश, इफ आई वर द किंग आई वुड रूल ओवर माय किंगडम। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम एडवाइस या कंडीशनल सेंटेंसेस के स्टडी में पढ़ते हैं। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है, कंडीशन नंबर सेकेंड। रिमेंबर गाइस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंड कंडीशनल्स। मैं आई go on teaching this conditional too in my next video or in coming videos. So remember, would का use
विल के पास्ट के रूप में, सेकेंड रिक्वेस्ट के यूज में, रिक्वेस्ट में वुड पोलाइट से पोलाइटनेस को इंडिकेट करता है, लेकिन कुड से थोड़ा छोटा पोलाइटनेस, कम पोलाइटनेस, लेस पोलाइटनेस। देन एडवाइस और कंडीशनल के रूप में, रिमेंबर गाइस कंडीशनल, कंडीशनल और कौन सा, सेकेंड कंडीशनल, वुड इज यूज्ड एज द सेकेंड कंडीशनल, जिसमें सेकेंड कंडीशनल में हमारा फर्स्ट इफ के बाद फर्स्ट सेंटेंस जो होता है सिंपल पास्ट का, नेक्स्ट सेंटेंस जब आता है तो सब्जेक्ट के बाद वुड फॉलोड होता है, रिमेंबर, एंड देन वुड के बाद V1 होता है। नाउ द थर्ड यूज, नेक्स्ट यूज इज टू शो विश। वुड का यूज हम विशेष को शो करने के लिए भी करते हैं। Would is used to show the wishes. How can we show the wishes by using would? Let's talk about. I would like to have more free time. ये मेरा wish है. This is my wish to have more free time. So whenever you would like to express your feelings, express your wishes, then you can use would. And remember, this is would. Would in sound also it is would. So express your feelings, express your wish with would. I would like to have coffee. I would like to have more money. I would like to have more precious time. Such things which you like to have more in your life. I like to have much time to spend for me. So free time, much free time. Like this you can use wish. You can express your wish with would. Now the next after would, let's talk about should. We have already studied one or two uses of should. First, should is past form of shall. Remember guys, should is the past of shall. Past form of shall. Remember it is past form of shall. Second, for probability, requirement or for general duties. कहीं पे requirements in Hindi words we call it चाहिए, जो काम हमें करना चाहिए या जहाँ जो चीज होनी चाहिए उस सेंस के लिए भी should यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, there should be a library in every village. तो there should be a library means in every village, हर एक विलेज में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए. तो इन दैट सेंस वी यूज शुड. शुड का यूज चाहिए के सेंस में करते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट और प्रोबेबिलिटी. रिमेंबर गाइस, किसी चीज की आवश्यकता के लिए, नीड के लिए, या फिर किसी चीज की संभावित होने के लिए हम चाहिए का सेंस यूज करते हैं शुड से. दैट देयर शुड बी कूल एंड काम environment around us. So that's what. Now next, advice, suggestions. Advice, suggestions and general duties all together you can say. जनरल ड्यूटीज, एडवाइस, सजेशन जो भी हमारे होते हैं, जो ऐसे काम जो हमें करनी चाहिए वो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारा ये सिंपल काम है हमें करना है. तो इन दैट सेंस वी आल्सो यूज शुड. लाइक वी शुड ड्रिंक वाटर, वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 7 liters ऑफ वाटर इन अ डे. सो वी शुड ड्रिंक, वी शुड डू आवर वर्क प्रॉपरली, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. तो ऐसे सेंस में शुड का यूज करते हैं. And then a very important use of should, which is very important for the purpose of exam. एग्जाम के पर्पज से ये शुड का बहुत एसेंशियल यूज है. शुड का यूज हमेशा लिस्ट के साथ किया जाता है. लिस्ट डैश डैश शुड. लेट्स सी द एग्जांपल. वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल. रिमेंबर गाइस, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंस देता है. This is a sentence of negative sense, but there is no use of not in it. So guys, remember, keep practicing, keep learning, and I hope you enjoy watching my videos, and do subscribe it, do write your comments, and keep studying, keep enjoying. Thank you and have a nice day.